वेलकम टू द कोहली इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमैट्री का पोर्शन असी शुरू किया होया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 18 36 54 72 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈਏ। sin 18 डिग्री अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 cos 18 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4 cos 36 डिग्री अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे 4 साइन 36 डिग्री अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4 साइन 18 कॉस 18 कॉस 36 साइन 36। देखो भाई ਜਿਹੜਾ sin 18 है ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, cos 18 ਚ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, cos 36 ਚ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। sin 36 ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 0 30 45 60 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲ, ਆਈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲ ਹੀ ਨੇ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਫਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, आओ ਆਪਾਂ डिस्कस करिए सम। पहला सम पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं सम करा चुके हैं, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ स्टार्ट की करांगे। पहले सम तो कर लो, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सम नंबर 7 ਇੱਥੇ 8 ਲਿਖ ਲਓ। ओके, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री tan 81 डिग्री। ओके, साडे कोल इस तरह का रिलेशन है। देखो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ, ਲੈਫਟ हैंड साइड tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री tan 81 डिग्री। देखो जिमें 81 ते 9 90 बन गए ना पूरे, 63 ते 27 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 90 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री tan 90 माइनस 27 डिग्री tan 90 माइनस 9 डिग्री tan 9 डिग्री tan 27 cot 27 प्लस cot 9 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैल्यू चेंज होएगी क्यों? 90 माइनस थीटे वाले ने। ओके, tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री, इनका एक ग्रुप बना लेना है। माइनस कॉमन लै जानी है, तुसी इनका एक ग्रुप बना देना है। tan sin 9 ओवर cos 9 cos 9 over sin 9
sin 27 cos 27 cos 27 sin 27 sin square 9 degree cos square 9 degree sin 9 cos 9 okay minus sin square 27 cos square 27 sin 27 cos 27 आइडेंटिटी बन गई 1 आ गया 1 ओवर sin 9 cos 9 1 ओवर sin 27 cos 27 2 नाल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो अपने कोई फार्मूला बन जाएगा हाफ एंगल ओके 2 ओवर sin 18 degree 2 over sin 54 degree 2 over sin 18 degree 2 sin 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री 2 ओवर sin 18 डिग्री 2 ओवर cos 36 degree. Putting the value of this under root 5 minus 6 बटे 4 under root 5 plus 6 बटे 4 4 ऊपर भेज दो कितना आ गया 8 8 8 is taken as common जे नहीं कॉमन लेना तो तुसी आ एलसीएम रख सकते हो 8 अंडर रूट 5 प्लस 8 minus 8 under root 5 plus 8 this one cancel out 16 a plus b a minus b 4 equal to right hand side okay हाँ जी prove that sin 18 cos 36 are the roots of the equation roots of equation 4x square minus 2 under root 5x plus 1 equal to 0 कहता प्रूव करो कि भी ਜਿਹੜਾ sin 18 है आ sin 18 ते cos 36 इस इक्वेशन ਦੇ रूट ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ sin 18 ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ cos 36 ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਹੈ
आओ आपां सॉल्यूशन करिए द गिवन इक्वेशन the given equation 4x square minus 2 under root 5x plus 1 equal to 0. Compare it with okay ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ a is equal to 4 minus 2 under root 5 c is equal to 1. First of all find the discriminant minus 2 under root 5 whole square 4a 4c 1 हाँ जी 20 minus 16 4 is greater than 0 therefore roots are real and unequal क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी है now x is equal to minus b अब साढ़े को फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦਾ ठीक b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 under root 5 plus minus d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 upon 2a 4 ਦਾ under root 2 under root 5 2 over 2 into 4 2 is taken as common 1 upon 2 into 4 2 ਨਾਲ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ cancel under root 5 plus minus 1 upon 4 there are two values of x ठीक under root 5 plus 1 upon 4 किदी वैल्यू है cos of 36 sin of 18 therefore sin 18 and cos 36 are the roots of given equation proved okay ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ 18 ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ x ਤੇ x ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਟ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ आओ अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करिए प्रॉब्लम नंबर 10th important problem है 10th prove that cos 2 pi upon 15 cos 4 pi upon 15 cos 8 pi upon 15 cos 16 pi upon 15 equal to 1 equal to 1 ये अपने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड
16 cos 2 pi upon 15 cos 4 pi upon 15 cos 8 pi upon 15 cos 16 pi upon 15। ਲਓ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2 ਫਿਰ 4 ਫਿਰ 8 ਫਿਰ 16। ਜਦੋਂ ਐ ਦੁੱਗਣਾ ਚੱਲੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 16 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 8 upon sin 2 pi upon 50। मैं sin 2 pi upon 50 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, 2 sin 2 pi upon 15 cos 2 pi upon 15 cos 4 pi upon 15 cos 8 pi upon 15 cos 16 pi upon 15। sin 2 pi upon 50 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਐਂਗਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 16 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖਿਸਕਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਧਰ 8 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਕੇ, एट sin 2 pi upon 15 इंटू, हाँ जी, साइन हाफ एंगल फार्मूला डबल हो जूगा इसका, cos 4 pi upon 15 cos 8 pi upon 15 cos 16 pi upon 15। ठीक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਇਹ ਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਐਂਗਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ 4 upon sin 2 pi upon 15 into 2 sin 4 pi upon 15 cos 4 pi upon 15 cos 8 pi upon 15 cos 16 pi upon 15। 4 over sin 2 pi upon 15 sin 8 pi upon 15 cos 8 pi upon 15 cos 16 pi upon 15। ठीक, आ 8 8 फिर हो गए 2 ਇਹਦੇ ਚੋਂ फिर ब्रेक कर लो, 2 sin 2 pi upon 15 2 sin 8 pi upon 15 cos 8 pi upon 15 16 pi upon 15। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਐਂਗਲ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ओके, 2 over sin 2 pi upon 15, हाँ जी, sin 16 pi upon 15 cos 16 pi upon 15। बस हर बारी यही फार्मूला लगी जाऊगा। बस मैं इतने फिर भी लिख देना नोट पा के साइड ते फार्मूला, sin 2a 2 sin a cos a, ये रूल यूज करी जाने बार 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 रिपीट होता है भी जिथे 2a थे जे तो इथे 2a है, आ मान लो a है आ a है, फिर ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ठीक, आ 2 एक लास्ट बच गया अपने कोले
1 over sin 2 pi upon 15, 2 sin 16 pi upon 15, cos 16 pi upon 15, 1 over sin 2 pi upon 15, sin 32 pi upon कितना आ गया 15, ओके 1 over sin 2 pi upon 15, sin हाँ जी 2 pi प्लस ओके ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ 15 दूनी 30, 30 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 32, ठीक 2 pi plus theta fourth quadrant which all positive value no change, okay आ पूरे का पूरा की हो गया कैंसल इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी वधिया ढंग दे नाल तुसीं इहनूं समझना है, इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम, ठीक। सम नंबर 11, prove that one plus cos pi upon 8, 1 plus cos 3 pi upon 8, 1 plus cos 5 pi upon 8, 1 plus cos 7 pi upon 8 equal to 1 over 8, ओके ये असी प्रूफ करना है, ठीक। बस असी इन्हां वैल्यूज़ नूं चेंज करांगे, असी जिवें पाई पाउण 8 7 पाई पाउण 8 बन गया 5 ते 3 8, इन्हां दे लई की बन गया ये 8 बन गया, असी इन्हां नूं ही सॉल्व करना है। 1 plus cos pi upon 8, 1 plus cos 3 pi upon 8, 1 plus cos 5 pi upon 8, 1 plus cos 7 pi upon 8, 1 plus cos pi upon 8, 1 plus cos 3 pi upon 8, 1 plus cos pi minus 3 pi upon 8, 1 plus cos pi minus pi upon 8, 1 plus cos pi upon 8, 1 plus cos 3 pi upon 8, 180 minus theta 3 pi upon 8, second quadrant cos nectar cos pi upon 8, a plus b, a minus b, 1 minus
cos square pi upon 8 1 minus cos square 3 pi upon 8. Okay. Sin square pi upon 8 आइडेंटिटी लगाई 3 पाई upon 8 हाफ एंगल फार्मूले असी लगावांगे ठीक 2 sin square a 1 minus cos 2a upon 2 ठीक जब 1 minus cos 2a 2 cos square a 1 plus cos 2a हाँ जी साइन स्क्वायर आ नीचे वैल्यू 2 1 माइनस cos इसका दुगना करके लिख देना पाई अपॉन 4 अपॉन 2 1 माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 ओवर 2 ठीक 1 माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 4 1 माइनस अंडर रूट 2 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस cos 135 डिग्री बन गया 180 माइनस 45 डिग्री ठीक 1 माइनस अंडर रूट 2 1 माइनस प्लस बन गया cos 45 क्योंकि इस नेगेटिव आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे अपॉन 4 cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 अपॉन 4 ठीक अपॉन कितना है 4 इतने आइडेंटिटी लगा दे ए आया जाएगा हाँ फिर आ जाएगा 1/8 राइट हैंड साइड हाँ जी उम्मीद करदा इनू भी ये समझ बहुत वधिया लग गए होणगे ये साडा टॉपिक इत्थे 18 36 54 72 का खत्म होंदा है ठीक है ते नैक्सट लैक्चर दे विच असीं नवां टॉपिक लेके आवांगे ओके बाय बाय।